Yes, please. Training samples are exported. Okay. So I hope all of you have exported training samples. So all these training samples are in a vector format. So we have to convert it into a raster format. So for that, go to the layer manager, map type conversion, and vector to raster. Vector, then map type conversion, vector to raster. I'm repeating the steps. So first go to the vector layer, then map type conversion, and then click on the vector to raster. Go to the main window, then select vector, select scanning, name is training map. And select the source of raster values as attribute. And now you have to click on the attribute tab, select the attribute tab, and in this you have to select the name of column for attribute and parameter as cat, and the name of column used as raster category as class, and then you have to click on run. So once the process is completed, it will be added in your layer window. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा. Okay. So first go to the vector, then go to map type conversion, then select vector to raster,
In the vector map, you have to select the uh, sample which is named as training, vector map layer training, and in the output raster map, you have to assign the name as training underscore map, and in the source of raster value, you have to click on attribute. Then go to the attribute, and in the name of column for attribute parameter, you have to select cat, and in the column name of column used as raster category label, you have to select as class. After selecting all this, you have to click on run. Once the process is finished, it will be added in your layer menu. You can see training underscore map. Anyone else is facing the issue in any particular step? I hope all of you have generated training samples and uh, change it into a raster image. If you have any difficulty or lagging with any step, then you can ask. सर ये वेक्टर डिजिटाइजर वाला ही नहीं हो रहा है मेरे से, तो इससे जो पिछला वाला स्टेप था वेक्टर डिजिटाइजर जहाँ से ट्रेनिंग बनाना शुरू किया था। जी सर। ओके, इसमें आपका 2D करके शो हो रहा है? नहीं सर, ये मैं यही नहीं दिख रहा मेरे इसमें। टू डी व्यू दिख रहा है इसमें। हाँ, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ। ओके ठीक है सर, आ गया। वेक्टर डिजिटाइजर आएगा, उसके बाद सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर सोर्स ऑफ रास्टर इसमें क्या एट्रीब्यूट डालेंगे ना? सोर्स ऑफ रास्टर में क्लास आएगा एक। सर इसमें एट्रीब्यूट है, कैट है, वैल्यू है, जेड है, डायरेक्शन है। ओके, एक मिनट। Okay, source of raster value, you have to select attribute. उसके बाद एट्रीब्यूट पे जाएंगे। हाँ, उसके बाद एट्रीब्यूट पे in the attributes you have to select the name of column for attribute parameter as cat. And in the name of column used for raster category label, you have to select the class. इसमें क्लास तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ कैट ही आ रहा है। फर्स्ट वाला जो है नेम ऑफ कॉलम फॉर एट्रीब्यूट पैरामीटर, उसमें आपको कैट सेलेक्ट करना है। हाँ सर, उसमें कैट सेलेक्ट कर लिया, बट जो लास्ट वाला नेम ऑफ कॉलम यूज्ड एज रास्टर कैटेगरी, इसमें सिर्फ मेरे में कैट ही शो हो रहा है और कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो जब एरो से डाउन उसमें आपने एट्रीब्यूट बनाया था, उसमें कुछ जो आपने एट्रीब्यूट टेबल बनाया उसमें शायद कुछ एरर आया आपके।
आपने जो ट्रेनिंग सैंपल सेलेक्ट किया था उसमें जो डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट करना था वो सही से सेलेक्ट किया है? जो आप जिस पे काम कर रहे थे आपने वही सेलेक्ट किया है या दूसरा सेलेक्ट किया है? नहीं सर, वही सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसके आउटसाइड यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आ जाता है कि यू हैव सेलेक्टेड द आउटसाइड ऑफ योर ट्रेनिंग सैंपल एरिया। मेरा कहने का मतलब है जैसे आप आपके 2 विंडो ओपन थे, यहाँ पे आपका काम कर रहे थे ट्रेनिंग वाले में, उसमें आपने क्या नाम दे रखा था? द लैंडसेट ट्रा। सिग्नेचर के लिए जो ट्रेनिंग वाला था उसमें आपने ट्रेनिंग ही नाम दिया था या कुछ और नाम दिया था? अगर आपने कुछ और नाम दिया था तो उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे सर? आपने ट्रेनिंग सैंपल्स मार्क किए थे सबके? यस सर, ट्रेनिंग सैंपल सबके मार्क कर दिए थे। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। वेल, यस। तो ओके, एक बार जो दूसरे वाला विंडो है ग्रास का उसमें जाइए जिसमें आपने ट्रेनिंग सैंपल सेलेक्ट किए थे। ओके, इसमें सारे क्लास के हो रखे हैं ट्रेनिंग सैंपल, इसको एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट वहीं पे आइकन है ना एक्सपोर्ट का। अच्छा अभी इसमें वापस रिक्वायर्ड में जाइए। इसको अभी के लिए एक बार आप क्लोज कर दीजिए वेक्टर टू रास्टर वाले को। आपको एक्सपोर्ट नहीं हुआ है शायद। वेट का आ रहा है सर, वो एक बार वेट कर लेते हैं। हाँ, तो अब क्योंकि आपने एक्सपोर्ट नहीं किया था इस वजह से इशू आ रहा है। वो एक्सपोर्ट करोगे उसके बाद आप बाकी वाले स्टेप फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। Anyone else is facing any issue? सर यहाँ तक एक्सपोर्ट हो गए हैं ये वेक्टर। Sorry? वेक्टर टू रास्टर तक तो सिग्नेचर एक्सपोर्ट हो गए हैं जहाँ तक आपने बताया। Okay. So all of you are followed till this. Can we take a lunch break here?
Yes, yes. If all of you have followed till this step or you don't have any difficulty till generation of training samples, if you have any query, then you can ask. Otherwise, we will take the break of 15 to 20 minutes. Then we will be start the next session. You can write down the attendance in the chat box. Please Okay, avoid sir. Sir, repeating the sir, attendance. please specify the exact timing because that gives our mind a signal that after 20 minutes we have to join. It is also easy for you also for those time. Is 20 minutes enough, or you want 30-minute break? 30 minutes, sir. Lunch and Okay. we will be Okay. ready for next session. Okay. 30 minutes will be enough. So it's suppose 2:40. We 05. will meet at after 30 minutes. You can write down the attendance, and those who have already write down the attendance, please don't rewrite it again in chat box. After 30 minutes, 3:10, sir. At 3:10. Please. Okay. Okay, sir. Thank you so much. No need to log out. You can mute yourself and do the work. And we will meet after at 10, 3:10. Those who have not write the attendance, please write the attendance in the chat box for the first session. I hope all of you are back. Shall we start the second session? Yes, sir. Okay. So in this session, we will be covering the supervised image classification from the training sets which we have generated in the Saga as well as in Grass. So first start with the Saga GIS. So open the false color composite in Saga, and once you open this false color composite, you have to go to the geo processing, then imagery, then go to classification, then click on the supervised classification for grids. Geo processing, go to imagery, then classification, then supervised classification for grids. Once you click on this, it will open a new dialog box where you have to select the grid system, as we already selected in the yesterday's sessions. And in the features, we have to select the band. So I am selecting the four band, blue, green, red, and NIR band. Then click on OK. In the classification, you have to click on create. And in the training area, you have to assign the training areas which we have generated in the morning session. And in the method, you can select uh, among these methods. There are several methods. You can select any one of these. So first we will start with the minimum distance, and we will also practice with the maximum likelihood. So as per the lab manual, you have to generate maximum likelihood. So we will start with the maximum likelihood. So I'm selecting the maximum likelihood. After selecting all these details, you have to click on OK.
And once the classification process is completed, the maximum likelihood classification output will be added in the manager window. You can open it. सर ये वाला स्टेप फिर से नहीं समझ में आया कैसे ऐड करना था जब ये सेशन शुरू किया. Okay. So have you opened the first color composite in Saga? Yes sir. Okay. You are your training samples in opened in the Saga. Yes sir. Okay. Now go to the geo processing. Then go to imagery. Then go to classification, and then click on supervised classification for grids. Once you click on the supervised classification for grid, it will open a new dialog box where you have to select the grid system. Your grid system will be this the 30 meter and showing the value of lat long and the pixel. And in the features, you have to select the bands which you added, band 2, 3, 4, and 5. ये वैल्यू तो 30 मीटर वाली नहीं है. आपका कौन सा डेटा है? जो आपने आज शेयर किया था सर. 30 मीटर का ही है. Okay, can you share your screen, please? इसमें Okay. So, okay, there is no option for the grid system. So you are open just one grid. So in the updated version, it's not showing a grid system. So you have to select the features in which you have to select all the 4 bands. No, no. In there is option for grid system in the features. Okay. There is first option for features, then grid system. Okay. So in the features, select all the 4 bands. First, select the grid system of 30 meter. That's fine. कर दिया सर. नहीं नहीं, ऊपर आपका जो फीचर्स में नो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसमें सेलेक्ट कीजिए. उसमें जो ऑप्शन है, हाँ, इसमें अभी चारों बैंड सेलेक्ट कीजिए. चारों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो. जो ऊपर वाला एरो है फर्स्ट, जिसमें दोनों एरो शो कर रहा है, नहीं उसके जस्ट पास में जो डबल एरो है, हाँ, उससे सारे बैंड एक साथ हो जाएंगे. ओके ओके. एंड इन द क्लासिफिकेशन, just click on create. In the class grid system classification, create. In the quality, select the quality, not set. Last option, not set.
Uh, and in the training areas, in the in the training samples, okay. Um, okay, now you have to select the method, maximum likelihood. Okay. Now run. Okay. Click on OK. Go to the uh, surprise classification. Result is not generated. There was an error. So follow this. Repeat the steps. Go to the geoprocessing. You can directly select from. Okay. So in the training samples, you have to select training areas in the training. On the above training areas. Now you have to select the training. Okay. In the IDs, you have to select name. Okay. Now run the L2 training classifiers. Uh, Open the attribute of your training samples. Right click on the training sample. In the table, training sample, right click, attribute, show table. Okay. Your training samples are not generated. That's why it's showing an error. First, you have to generate the training samples. All the training sample which you generated, it will be shown in the ID and name. So you have to Okay, sir. assign ID and name to the particular classes, then it will show the result. Okay, sir. Okay. Anyone else is facing any issue? So once you're finished with the process, classification process, your result will be shown like this, depending on the training samples which you have selected. So I selected few samples. That's why there are a lot of error. So this is just for the demo purpose. So those who have selected the more number of samples might get a better result. I'm repeating the steps. Go to the processing, then click on imagery, then select classification, and in this you have to select surprise classification. Here you have to select the grid system, then in the feature you have to select all the four bands, and in the classification you have to generate, click on the create, so it will generate a new band. And in the training area you have to select the training sample which you just created in the previous session, and in the class identifier you can select either ID or name if you have assigned the different IDs to different classes, or different name to the different classes. And in this method you have to select any one of these, and after selecting the methods you have to click on OK. It will show the result. You can compare both the areas.
and check for the accuracy depending on your number of samples or the classes. I selected only 4 to 5 classes. That's it. It's showing only these classes. Those who have selected more than 5, their result may vary. Please generate both maximum likelihood and minimum distance output, and then we will proceed with the next step. If you face any difficulty in any step, then you can ask. Mr. Subramaniam Korivi, are you comfortable in the language, or are you following all the steps? If anyone is having any issue related to language or any steps, then you can ask. किसी को अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो या लैंग्वेज में इशू आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो पूछ सकता है. सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मिनिमम डिस्टेंस दोनों के लिए जनरेट कर लिया है. Okay. What about others? All of you have generated both output, minimum likelihood and minimum distance and maximum likelihood. सर मेरे पास
पास ये साका 9.7.2 है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन फॉर मेजॉरिटी क्लास करके कुछ। ग्रिड वाला नहीं है, सीधा है, पर हो गया है जो आपने अभी बता दिया था। ओके, हो सकता है उसमें अभी कुछ चेंजेस किए हो, मैंने एक बार चेक नहीं किया है। If no one else is responding, then I will assume that all of you have generated and you have no query till now. So we will move to the next step. Sir, when I do the Yes, please. maximum likelihood or minimum distance, it Okay. is the image is coming blank, like in single color. Why? Okay. Uh, in the attribute part, you have selected class or ID. The ID. Okay. So you have not assigned a different ID to different classes. In the similar step, change this ID to class and then generate the result. Or you can assign the different IDs to different classes and then you can generate the result. So if your ID is having a similar value or same value for all the classes, then it will show a single class output. Oh, Shall we move to the next step? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Okay. Okay, so we have finished with the classification and the Saga GIs. Uh, there might be an error depending on the mixed pixels and the number of training samples which you have selected. So uh, now we are moving to the steps for supervised classification in GraphGIS. So for that, in GraphGIS you have to open the images in the first color composite. And after opening this, you have to go to the imagery, then classify image, then go to import for supervised MLC. I'm repeating the steps. Go to the imagery, then classify image, then go to input for supervised MLC. When you click on this, it will open a new dialog box where you have to select truth training map and input imagery map and input submap and the name of output map. So we will select one by one, and you have to select training map in the ground truth training map, and in the input group and subgroup you have to select the file as signature. And you have to also assign the name of output file. Yes, the name is not mentioned in the lab menu, so I'm writing as signature.
then click on run. So once this process is finished, you have to follow the next step, that is go to imagery, then classify, and then maximum likelihood classification. Go to imagery, then classify image, then go to maximum likelihood classification. I'm repeating the steps. Go to imagery, then classify image, then maximum likelihood classification. Is there any query till this step? Okay. So in this you have to assign the imagery group, subgroup, and input file containing signature, and then you have to assign the name of output raster map. Once you assign the name, you have to click on run. So once you click on run, your output will be added in the map. You can see the output. You can change the color of the different classes.
Depending on your number of samples, it might show the error. If you selected high number of samples, it will show lesser error. So I hope all of you have followed till this step. If you have any query, then you can ask. So while changing the colors, the specified number of classes are not coming there. There are more than what I tried earlier. Okay. So for that you have to select the load color table. In this you have to select any color. Suppose I am selecting a random color and then click on set. So it will show the number of classes which is available in your classes. Otherwise it will show the all different classes according to the ready matrix classes. If there is 256 classes, then it will show the range from 1 to 256. Sorry, 0 to 256. So you have to select the load color These table. 1, 2, 3, 4, 5 classes that are shown in your window, those are not shown there. Continuously many classes are there. Okay. In the drop down menu of load color table, you have to select any color and then click on set. Once you click on the set, it will show a limited number of classes which you generated, and then you can change the number of color and then Only assign the limited. name. Is there any other query? Try to generate surprise classification output in Saga as well as in GS, and then try to change the color of all the classes. And if you face any difficulty, then let me know. Once you finish with this process, then we will move to the next chapter. Yes, please. Anyone have any query related to the supervised classification? Anyone is facing any difficulty in performing supervised classification using any other method, such as maximum likelihood, minimum distance, or any other method in the Saga or uh, grass? Have been executed successfully. Sorry. Both have been executed successfully. Okay. Have you changed the color of the particular classes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In both output of the Saga as well as in grass? Yes, sir. Okay. What about others? All of you have generated maximum likelihood as well as minimum distance classification in Saga.
Yes, sir. Okay. Have you changed the color of all the classes? How many classes you have taken? Sir, I have taken 8 classes. Okay. In both maximum likelihood as well as minimum distance. And which one is showing the better result? Um, Then the minimum distance. जी मनदीप पुनिया आप कुछ बोल रहे थे? Sir, I am saying that the maximum likelihood method of supervised classification in Saga performed better than minimum distance supervised Okay. classification method. Okay. There are around 30 people in the class, but I am getting response from only 2 to 3 people. What about others? Are you attending the class or just logging in doing your work? सर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मैंने कल वाली क्लास नहीं की थी तो मैं उसको बीच बीच में रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये चल नहीं रहा, जो पुराना प्रोजेक्ट है वो नहीं डाउनलोड कर रहा है तो फिर एरर आ रहा है। पुराना प्रोजेक्ट कौन सा? जैसे जो आज वाली क्लास में जो शुरू में ही किए थे, जैसे अभी मैं इससे पीछे वाला जब सागा वाले में कर रहे थे तो उसमें भी हुआ है, वो नहीं आ रहा था जिसमें आपने मेरी हेल्प करी थी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि शायद जो कुछ पुरानी चीज़ें जैसे आज वाली जो ट्रेनिंग सेशन वाली नहीं है उसमें, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता। ओके, कोई नहीं, आप कोशिश कीजिए अभी जितना टाइम मिल रहा है उसमें जल्दी करने का, ताकि अभी बाकी क्लास के साथ हो जाए, वरना फिर ज़्यादा इशू आएगा जब नहीं पूरा सर, हो कर जाएगा। लूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे पास ओके, है अभी 5 दिन, नेक्स्ट वीक से पहले वाले में मैं सर अपडेटेड रहूँगा। नेक्स्ट वीक से पहले आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसकी भी प्रैक्टिस करके आना होगा, अगर यहाँ यस सर। डाउट होगा तो। जी सर। हाँ सर, मेरी ना सिग्नेचर फाइल ऐड नहीं हो रही सर। सिग्नेचर फाइल ऐड नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है उसमें? एक्चुअली मैंने पहले बनाई थी तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रही सर तो सागा में सर। ओके, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? जी विशाल भारद्वाज जी, आपको कोई क्वेरी है? ओके, अभी आपने सिग्नेचर फाइल कहाँ सेव कर रखा है? सर अभी ना सर मिल नहीं रही है, मैंने 5 क्लासेस बनाई थी इसमें, मुझे ओके, जी सर। so you can try with one new signature file and just add 2 to 3 samples from each classes just for the demonstration purpose, so you can सर इसमें ऑप्शन practice. नहीं होता, ऑप्शन नहीं आ सकता कि यहाँ पे मतलब सर्च कर सकते हैं हम इसमें?
इसमें उसको आपने आपने सेव किया था या उस फाइल को सेव ही नहीं किया था? ऐसा सेव किया था, उसके बाद मैंने एक बार सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की रन भी किया था पहले मैंने। ओके, जी, जब मैं बयान आई थी उस टाइम में सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का भी रन किया था मैंने उस तो आपने कौन से फोल्डर में सेव किया था, याद टाइम। नहीं है आपको? जी। नहीं सर, याद नहीं अभी याद एक बार रिसेंट फाइल्स में चेक कर लीजिए अगर उसमें मिल जाए, या फिर नाम से सर्च कर लीजिए आपने क्या नाम रखा था। सर। विंडोज में सिग्नेचर जाके सिग्नेचर ओके सर। विंडोज में जाके सिग्नेचर से सर्च कर लीजिए, अगर कुछ होगा तो मिल जाएगा। ओके। अदरवाइज यू कैन क्रिएट a new file also. Anyone else? If no one is responding, then I will ask one by one. Hello. जी, Sir, in case other than the specified number of classes we have taken in supervised classification process, for example, I have taken 4 classes: water body, topland, then hollow land, and built-up area. okay. So Saga has called by those two algorithms, that is maximum likelihood and minimum distance, uh, classified into specified 4 classes. What I am seeing is that area, when compared with original image, uh, acquired more area than in actual. So, in case of these classification, if we give specified number of classes, it will only classify into those number of classes. No extra for anything other signature. No, the result will be depend on the number of classes you are assigning. So in the surprise classification, unsurprised, you are assigning. In the unsurprised classification, if you are assigning, there is a range of classes, number of classes that you have to assign. फिर ये आपके बहुत नॉइस आ रहा है, बहुत नॉइस आ रहा है. Uh, so you have to specify the number of classes in the surprise classification. We are selecting the range of number. So the output will be in between those range, and in the surprise classification, the output will be depend on the number of training samples which you have generated. So suppose you are giving the training sample of only 10 classes, then the output will be have only 10 classes. And if you are assigning a number training samples of more than 10, then the output will also vary. So you take if My you take question is that, sir, what will happen with the pixels for which we have not taken any signature? okay. So suppose you are taking a different classes such as forest, suppose vegetation, not differentiating between the vegetation and the forest. So one class is your vegetation, one class is your water body, and one is your settlement area, and suppose one is any other classes, suppose barren land. So if you assign the training samples of all these 4 classes: water body, vegetation, settlement, and barren land. Okay, so in these images which we are using, so vegetation, you are selecting the sample training samples of the vegetation, which is showing the spectral signature of red to pink color. So all the classes of the forest as well as of agriculture, which is showing a similar signature, uh, it will be added in the vegetation classes. And in the settlement area, your mining area will also be added in the settlement classes, as it is showing the spectral signature of both settlement as well as mining area is similar. So depending on the uh, uh, similarity of the spectral signature of different classes, it will be assigned to
other classes. I hope you got my point. Yes, sir. As the name suggests, maximum likelihood that the adjacent pixel is matching with the classified one, then it will decide for that one also. Yes. And if you are In case of in case of minimum distance, how it is? in the case of minimum distance, then it will see the with the spectral signature. There are suppose four classes and the center. There is one more class which is not classified. Then it will see the spectral signatures showing to the similar classes, and if there are two or more than two classes, then it will assign to that particular classes which is having a lesser distance. You got my point? Yes, sir. Thank you. In the maximum likelihood, it will assign according to its spectral signature, while in the minimum distance, it will also look for the distance of the already assigned classes or the already assigned clusters. Any other query? Thank you. We can proceed further. I am waiting for the, Mr. Ajit Kumar Singh, and there is one more over lagging behind. So I am waiting for 5 हमने to 10 minutes. Sorry? सर मेरे उसके आगे ही नहीं जनरेट हो रहा था सर, तो मैं पीछे फिर फर्स्ट से किया था उसको। ओके, आपका कहाँ पे इशू आ रहा है? जो हम उस टाइम कर रहे थे ट्रेनिंग सैंपल्स वाला, जब जनरेट कर रहे थे तो रिपोर्ट। ओके, आपका ट्रेनिंग सैंपल जनरेट ही नहीं हो रहा है। ओके, आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, change the color to the RGB. Go to the object properties window. Object properties window. Below the geoprocessing, there is an icon for object properties window. Right side, right side. White icon with the blue row below the geoprocessing. Right one. Yeah. Click on this. So go to the setting. Okay. Now first change the type to. Close it. Change the type to RGB from graduate. Type below type graduated. Change to RGB composite. Now select the different paint. RGB composite, not coded value. Now select the other bands in the green and blue. Green band 4 and blue band 3. Apply. Okay, which layer is open?
cancel. Close the map. Okay, you are assigning the color to the different layer which is not open. Select the layer 4. Layer 4. Yeah. I think you have opened the wrong band. Close the band which is opened in your map window. B5. Okay. Uh, Now right click on the training samples. Go to the attribute. Show table. So you have selected 3 different uh, polygons. So assign the different name to different polygons. Change the ID. First minimize it and check which class is this. Right click on the training sample. Show in map. Click on 6th map. 6 map. Yes. Okay. Which area you have marked? It's not visible here. Can you check in the map which classes you have identified or digitized for the training samples? सर ये पॉलीगन ही नहीं क्रिएट हो रहा था। ओके, फिर एक काम करो, जी सर। ट्रेनिंग सैंपल पर राइट क्लिक करके जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें जाइए। एट्रीब्यूट टेबल शो टेबल, एक बार वापस से कीजिए। ओके, अभी जो आपको तीनों क्लासेस से हो रहा है उसको एक बार रिमूव कर दीजिए। ओके, अभी इसको क्लोज कीजिए टेबल को। ओके, अभी राइट क्लिक कीजिए, ट्रेनिंग सैंपल, एडिट, ऐड पाथ, ऐड पार्ट, फिर इस पे जाना था। वाटर बॉडी पे ट्रेनिंग सैंपल सेलेक्ट कीजिए, एक्शन बटन पे क्लिक करके, एक्शन बटन ये ना एरो सर। जी। ओके, ओके आपका बन गया है ये एरो। ठीक है, अभी दूसरे वाटर बॉडी में जाइए। ये कुछ इसको राइट इसको एडिट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। नो नो, उसको रिमूव करना है। डिलीट सिलेक्शन, यस। ओके, अभी वापस से मार्क कीजिए। जब आप पॉलीगन क्लोज कर रहे हो तो आपको राइट क्लिक करना है। अब जैसे नहीं क्लिक हो रहा है कुछ। राइट क्लिक करो, ऐड शेप। ओके, अभी अभी बन गया। ऐड पार्ट। ओके, अभी दूसरी वाटर बॉडी में जाके मार्क कीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम 2 ही सैंपल ले रहे हैं। जी सर। ओके, राइट क्लिक करो मैप पे राइट क्लिक, एडिट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए।
यस। ओके, अभी इसके एट्रीब्यूट टेबल में चाहिए। ओके, अभी जो फर्स्ट क्लास का है उसका नाम दे दीजिए वाटर बॉडी। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी मैप में आइए। सर है, इसमें इसमें पहले ट्रेनिंग सैंपल पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड शेप, एडिट में जाके ऐड शेप। ओके, अभी सेटलमेंट है उसके 2 सैंपल ले लीजिए। ये सर। हाँ, अभी प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ 3 ही क्लासेस रखेंगे। ठीक है, first right click and then select edit select. Yes, go to attribute and assign the name. Change the id to 1. id ठीक है, okay, leave it. If there is any mistake, close the table and select one more class. Attribute. हो गया सर। अभी अगर वेजिटेशन का सैंपल लेना है तो एक बार उसका ले लीजिए, उसके बाद इसको रन कर दीजिए। बाकी सैंपल आप बाद में ले लेना। अभी प्रैक्टिस के लिए यही देखते हैं। हो गया सर, 3 सैंपल हो गए। ठीक है, अभी इसको रन कीजिए सरप्राइज क्लासिफिकेशन। ये है पहले से ही सेव कर दो। लोड। क्लासिफिकेशन की जगह आप अलग अलग से क्रिएट कीजिए उसमें। जो पहले वाला क्लासिफिकेशन है ग्रिड सिस्टम में ऊपर, जी सर। उसको क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ग्रिड सिस्टम में नहीं, नीचे नीचे क्लासिफिकेशन में क्रिएट का नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लासिफिकेशन के बाद। हाँ, ओके, इसमें ट्रेनिंग एरियाज क्लास आइडेंटिफायर की जगह ओके ठीक है, नाम चलेगा। ओके, हाँ पहले यही एरर आता था। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, अभी एक बार इसका आउटपुट चेक कर लीजिए। कहाँ से करना है सर? जो 6th नंबर पे आपका क्लासिफिकेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड आ रहा है ना, उस पर जी डबल सर। क्लिक कीजिए। ओके ओके ठीक है, अभी आपने 3 सैंपल लिए थे, उसी के बेसिस पे ही आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सर तो अभी इसमें जो भी कलर वगैरह चेंज करना हो, कलर चेंज के लिए आपको टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। ये लेजेंड में जो नहीं, लीजन में नहीं, सेटिंग में ही चाहिए। हाँ,
यहाँ पे नीचे आपको क्लासिफाइड के बाद जो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं टेबल के बाद में जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर। ओके सर, वो देखा था जो आप अभी करवा रहे थे, हाँ, इसमें से ऐसे चेंज कर करके कर। हाँ, ठीक है। जी सर। हो गए? सर। और किसमें डाउट है? नहीं सर, थैंक यू सर। ग्रास में हो गया? जी सर। ओके, ठीक है। और किसी को इश्यू है सागा में, ग्रास में? Is anyone else is facing any difficulty in performing surprise classification, either in Saga or Grass? If anyone is facing any difficulty, then let me know. Otherwise, we will move to the next part. So we just performed surprise classification from the training samples which is generated in the first session in the both Saga as well as in Grass CIS. So your exercise 7 is completed. Now we are moving to the next exercise, which is the post classification processing. So as we have seen that there are 9 errors in the output which is generated even after we selected the maximum number of training samples having uh, the pure training samples. Even after the classification, if there is an issue, so to remove those errors, we have to perform the classification, applying some filters such as majority filter and minority filter. So we are performing this first classification processing in Saga GIS. You have to explore it in Grass GIS. So in the post classification, there are 3 different steps. First is recoding, where we assign the different colors and change the number of classes or assign a different colors of names to the classes. And if there is any more than 2 classes are there, so we can merge those classes. And in the majority filter, the classes, suppose there is a certain paper texture in the classification output. So there is 1 or 2 pixels are there in the major classes. Then if you apply the majority filter, then depending on the majority classes, so those error will be assigned to the majority of classes which is there. And in the minority classes, if there is any pixels which is showing 1 or 2 pixels, so based on that pixel, not the majority classes, but the surrounding pixel which is showing the error will be assigned as a minority classes. So we will perform this and check the difference between the classified image as well as majority after applying majority filter as well as minority filter. So I already discussed about this, how you can change in the same name to different classes and changing the color. So recording part is completed. So after the classification, this is the final output after recording. And now we have to apply the majority filter. And to apply the majority filter, we have to go to the geoprocessing, then grid, then filter, and then there is option for majority and minority filter. Which will open this dialog box. So go to the geoprocessing. Grid, filter, go to the majority and minority filter. Once you click on this, it will open a new dialog box. I'm repeating the steps. Go to the geoprocessing, then go to grid, go to filter, then select majority or minority filter,
and then select the grid system. Grid. In the grid, you have to select the output of the classification. So I am selecting the classification of minimum distance. In the filter grid, you have to select the grid, so it will open a new band or generate a new band, so it will not affect your final output. So there will be two different band, one with the before applying the filter and one is after applying the filter. So first we are applying the majority filter. So in the majority filter you can apply the threshold also, and in the kernel type you have to select, you can also select the square or circle. And for now we are selecting the square and changing the radius to 1, and then click on OK. So in your manager window you will see one new band is added. So open this band in a new map, and now zoom to the areas. Selecting the synchronize map extent. Now I'm zooming into different areas. Now you can see as we have applied majority filter. So image on the right hand side is before applying the filter, and image on the left hand is after applying the majority filter. As you can see on the classified image, there were salt and pepper textures. This yellow pixels are also there in the built up classes. So after applying the majority filter, most of the error was removed. So depending on the number of kernel size and shape of the kernel, it will remove the error. If you increase the radius size, it will also remove the error which is also there. But you have to check the image, of the classified image, check the accuracy and error. If their accuracy less than sufficient, then you have to apply the filter, and after applying the filter you can cross check the accuracy, and if there is any accuracy which is lower than the required accuracy, then you have to further process. In the similar way, you can also check for the other classes which is showing a salt and pepper text before and after applying the majority filter. I hope it's clear how the majority filter is working. As you can see in this image, there are three different pictures which is showing these classes. So after applying majority filter, these classes are assigned as majority classes. सर ये क्लास जो इमेज 6 एंड 5 है उसमें क्या हमने रेडियस साइज चेंज करके अलग अलग वैल्यू लिया है? जैसे जो ये हमारा इमेज था 5 वाला, इसमें ये है क्लासिफाइड आउटपुट है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका जो आउटपुट आया था वही आउटपुट है। ठीक है, उसमें हमने कुछ रेडियस नहीं किया। जो फाइनल आउटपुट आया था सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के बाद में, वो आउटपुट है। अब इस आउटपुट पे हमने मेजॉरिटी फिल्टर रन किया है। मेजॉरिटी फिल्टर रन करने के बाद जो आउटपुट आया है, जो आप रेडियस अप्लाई करते हो, वो आप जब फिल्टर अप्लाई करते हो तब आपको रेडियस अप्लाई करना है। तो रेडियस अप्लाई किया था उसमें, उसके बाद का ये आउटपुट है। अभी हमने मेजॉरिटी फिल्टर अप्लाई किया था, तो उस वजह से क्या हुआ, जो इसमें यहाँ पे जो आपको क्लास शो हो रही थी उसमें जो मेजॉरिटी क्लास था उसके आसपास के पिक्सल के अकॉर्डिंग जो मिसक्लासिफाइड हो रहा था या सॉल्ट एंड पेपर टेक्सचर आ रहा था, उसको मेजॉरिटी फिल्टर ने रिमूव करके उसको एक एज ए सिंगल क्लास जनरेट किया है। जैसे आप बाकी क्लासेस में भी देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपका सॉल्ट एंड पेपर टेक्सचर दिख रहा था, वो अभी मेजॉरिटी फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपका रिमूव हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फिल्टर अप्लाई करना है। अगर आपका सॉल्ट एंड पेपर टेक्सचर में आपका जो मेजॉरिटी क्लास है उसके अंदर माइनॉरिटी वाला एरर आ रहा है, तब आप मेजॉरिटी फिल्टर अप्लाई करते हो। अगर आपका कोई क्लास है जिसमें माइनॉरिटी क्लास आ रहा है, वो कम रिप्रेजेंट हो रहा है या उसमें एरर ज़्यादा है, तब आप माइनॉरिटी फिल्टर अप्लाई करते हो। ओके, थैंक यू सर। I hope it's clear to all of you.
when we apply the majority filter and how you can apply the majority filter on the classified image. So it's better to generate the different band, so it will not affect the output result, and you can apply further processing on the final output. If you have any issue in this step, then you can ask. Apply this majority filter on the both output which you have generated, maximum likelihood as well as minimum distance, and also change the radius as well as the kernel type, and check the output and compare with the satellite data which image is showing the better result after applying the majority filter. Is there any confusion in these steps? How you applied a majority filter? हेलो जी, जस्ट प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फिल्टर है, आपने बताया कि ये उन केसेस में है कि जैसे हम कोई इमेज में कुछ हमारे अगर मेजॉरिटी एरिया में कोई माइनॉरिटी का पिक्सेल आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए मेजॉरिटी फिल्टर लगा देंगे, और अगर माइनॉरिटी पिक्सेल्स में कोई मेजॉरिटी का है तो माइनॉरिटी फिल्टर लगा देंगे। पर अगर हमें एक्यूरेट क्लासिफिकेशन करना हो कोई भी सैटेलाइट इमेज का, तो ये क्या बोलते हैं वोट सम ऐसे लगा देना, तो मतलब फिर तो मैं मतलब रफ में चल सकता है, पर वैसे तो हमें मैनुअली चेक ही करना पड़ेगा कि कितना चेंज हुआ है। हाँ, जब भी आप क्लासिफाइड आउटपुट जो होता है उसके बाद आप चेक करते हैं एक्यूरेसी कितना है और उस एक्यूरेसी में आपका क्या एरर आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द एरर आपको चेक करना पड़ता है आपको फिल्टर अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर जैसे कुछ आपने ट्रेनिंग सैंपल्स कम लिए हैं, आपका कुछ क्लासिफाइड इमेज में जो आपका आउटपुट है उसमें कुछ क्लासेस आपकी शो ही नहीं हो रही हैं या कुछ क्लासेस मिसिंग हैं, तो जो क्लासेस मिसिंग वगैरह है उसमें आप अप्लाई करते हो। जब आपका आउटपुट जो फाइनल आउटपुट होता है उसमें आपके क्लासेस वगैरह सब आ गए, बट फिर भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ ये टेक्सचर का इशू आता है, उसमें कहीं पे एक दो क्लासेस मिस क्लासिफाइड होता है या कहीं पे मिक्सिंग ऑफ द क्लासेस हो जाता है, जैसे उसमें आ रहा था सॉल्ट एंड पेपर टेक्सचर। तो उस केस में आपको ये फिल्टर अप्लाई करना होता है ताकि जो आपका आउटपुट है वो बेटर हो जाए। उसके बाद भी आपको पहले वाला जो क्लासिफाइड इमेज है उसका एक्यूरेसी असेसमेंट करना होता है, और उसके बाद जो फिल्टर आपने अप्लाई किया है उसके बाद भी चेंज करना होता है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा ही। कभी-कभी हो सकता है कि जो क्लासिफाइड इमेज था आपका उसमें वो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी था, बट आपने फिल्टर अप्लाई किया तो उसमें कुछ क्लासेस जो थे पिक्सेल वो मिस क्लासिफाई हो जाते हैं। तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा दोनों में, अगर एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है तब आप जो फाइनल आउटपुट है उसको रख सकते हो, अदरवाइज जो आपका पहले का क्लासिफाइड इमेज है उसको रखना पड़ेगा, जिसमें आपका बेटर एक्यूरेसी आ रहा है उसको रखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। सर एक्सक्यूज में जी सर, कुछ डाउट होगा तो हम कल पूछवाएंगे, दोबारा पूछवाएंगे क्लास में आपसे, दोबारा कल या परसों कुछ डाउट होगा तो। कल परसों तो क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीकेंड होगा। अगर डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो आपका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा
उसमें उसी से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइप अलॉटेड होता है, ओके ओके सर। सारे डाउट्स नहीं ले पाते हैं। इसलिए अगर जो भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है सर। सर कोई बाद में कोई तरीका नहीं आप आपको अप्रोच करने का बाद में किस तरीके से मतलब कुछ भी होगा जो? बाद में आप पूछ सकते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हर सेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका साइकिल है उसका अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। आप जो भी क्वेरी है एकेडमिक से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो सब आप उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। अभी के प्रैक्टिकल में कोई भी इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Akanksha, are you there? Akanksha, Yes, sir. so have you completed this exercise? Sir, I'm doing. Okay. So how much you have done? Have you generated the surprise classification output? Aditya Daraya. Aditya Daraya. Yesterday, Darji, Yes, sir. have you completed the practical? Yes, sir. Right now, I was practicing for the yesterday's exercise, and in that clipping part, I Okay. was facing an issue. Like in the geo processing, I'm going into grid and then selecting the grid system, and again selecting the clip grids interactive. So a Okay. pop-up window will open, and when I select this no object, the browsing part is opening and another window is open, but the grids are not showing, like the tiles I have imported for the Landsat 8 data, for which I have created the false color composite. So that thing is not showing up. Can you please share your screen? Okay, okay. Is this your first session? No, sir, I was there in the last session also, but as I was in my like another class was going on, so I just attended, but I was not practicing that thing. Okay. Mr. Joginder Singh. Okay. Close this window. Okay. In the grid system, select the grid system. Go to J processing.
Have you shared your entire screen? Because I am not able to see the any menu. Okay, now go to the clipping part. You can directly select from the last option, which is clip grid interactive. Okay, select the grid system. Now first you have to select the grid system. Click on the node set in the drop down menu. Okay, select first. Yes. Now go to the no object. Click on the no object. Okay. Now select all the four bands. Add. Okay. Okay. Now go to the action button. The arrow icon. Yes. Now click on the map and drag to draw a polygon. Yes. To clip the part which is mentioned in the laboratory manual or which we are working, you have to change the value on the left, right. If you select this value and click on OK, it will create a polygon, but it will not be identical on which we are working. So you can change the value according to the image in the laboratory manual. Check the lab manual. Yeah. You can check the value and write the value of left, right, top and bottom value. Just click on OK. Okay. 4 new bands will be added. Have you downloaded the satellite data from the Google Drive link which I have shared? The satellite data which I have shared is already clipped. So if you want to practice the clip, then you can clip the smaller part. Follow the similar steps and instead of writing the value of the
uh, top, right, left, and bottom. Just assign the value as by default and then click on OK. It will click a particular part. The data which I shared is already clipped. So if you want to practice, you can also clip it further, or you can use download the satellite data from Earth Explorer and then try to clip it. Do you face any other difficulty? If you are not any uh, page, then we will move to the next. Mr. Ajit Kumar Singh, यस सर. हो गया आपका? हाँ सर, ये हो गया था. सर मेजोरिटी फिल्टर अप्लाई कर दिया आपने? जी सर. मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम लाइक्लीहुड दोनों पे? नहीं, मैंने मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला ही किया है. ओके, उस पर अप्लाई कर दिया फिल्टर? यस सर. ओके. मिस्टर अंकुश राय, अंकुश राय, I think most of the students are just logged in and doing their other works. So if you have any query, then you can ask. Otherwise, we will move to the next part. Anyone Next have part any query करते हैं. related to previous exercise? Okay, we are moving to the next part. Uh, Now we have to apply the minority filter. So to apply the minority filter, you have to follow the similar steps. Go to the geoprocessing, then imagery, sorry, grid, filter, majority, minority filter. And in this, you have to select the grid. In the grid, you have to select the classified image. And in the filter grid, you have to click on create, so it will generate a new output. And in the type, now you have to select the minority. And in the kernel type, you have to select a square and radius 1. Now click on OK. It will generate a new output. I'm opening it, and you can see the difference between the right hand side image on the upper part, which is the classified image, and the left hand side lower image is uh, the classified image after applying the majority filter, and on the lower side, right hand side, the image after applying minority filter. You can see the difference between all the three images, and you can also compare it with the classified satellite data and check which is showing the better result.
As you can see, there is one number of mixed pixel and the minority filter class, output of the minority filter image. I'm repeating the steps. Go to geoprocessing, then grid, then filter, then go to majority and minority filter. Then you have to select the grid system. In the grid, you have to select the classified image before applying the filter. And in the filtered group, you have to select the create, and in the filter type, you have to select a minority, and you can increase the threshold. And in the kernel type, you can select the square or uh, circle, and in the radius, you can increase the value, and then click on OK. It will generate a new output. Now try to generate the minority filter. Apply it on both maximum likelihood as well as minimum distance classifier output, and then see the difference, which is uh, showing the better result. सर ये मिनिमम लाइक्लीहुड वाला किधर से आएगा? सर वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, मिनिमम डिस्टेंस है. हाँ सॉरी, Minimum वही distance. मिनिमम डिस्टेंस वाला. जी. वो जब आपने सरप्राइज क्लासिफिकेशन किया था उसमें अलग अलग मेथड्स थे, तो उस मेथड में जैसे आप अप्लाई कर रहे थे, शो कर लेता हूँ. When you applied the classification, go to the geoprocessing, then imagery, then classification, and you have to select supervised classification for grid. In this, you have to select the grid system, and in feature, you have to select all the 4 bands. And in the classification, you have to select create, and then you have to select the training samples which you created. And in the methods, you can select the methods such as minimum distance or maximum likelihood. And there are other methods also. So you can select any of these and explore. Yes sir, thank you sir. Okay. If anyone has any query related to this exercise, applying majority filter, minority filter, then you can ask. As I already mentioned in the morning session, that before applying the processing,
we have to apply atmospheric correction, geometric correction, or radiometric correction on the satellite data which you downloaded, and after that you have to classify the image. Uh, After applying the atmospheric correction and other corrections, the output will be better. So you have to explore all the different methods to remove the error before applying the classification approaches. So after applying the classification approach, you can check the accuracy, and on the terrestrial data, accuracy must be more than 80%. If it's more than 90% or 95%, then your result is better. Otherwise, it must be more than 80%. While in the coastal part, due to the uh, more error or mixing of the pixels, uh, ideal accuracy should be more than 70% in the coastal areas. So in the upcoming sessions, you will know how to check the accuracy of this output data. There are different approaches to calculate the accuracy assessment. If you have any query till now, you can ask. एक्सक्यूज मी सर, से मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी जो फिल्टर से कहाँ से आएंगे ये जो प्रोसेस में जाके? जियो प्रोसेसिंग में जाके ग्रिड में जाइए, ओके, ग्रिड में फिल्टर, ग्रिड के बाद फिल्टर, जी जी, फिल्टर के बाद में आपको मिलेगा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी फिल्टर, लैप्लेसियन फिल्टर के नीचे। ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेरी? सर यस प्लीज। हेलो जी सर, कल कल और आज जो क्लास हुआ इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमें कब तक मिलेगा सर? इसका मेरे को आइडिया नहीं है, ये शायद सर के पास होगा, स्टडी सेंटर के पास होगा। तो एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जब भी होगा ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा ड्राइव पे। ओके सर। सर ये बेनीधर देशमुख सर को बोलना पड़ेगा सर? हाँ, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, वो देख लेंगे तब बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेरी है? एक्सक्यूज मी सर,